See, it was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight, and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying it? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami, Mohammad Shami, when they lost against Pakistan, and most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. He's a captain of the team. And also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. And I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. Ma'am, how do you see the Mumbai court has said this thing to register a case against Bharti Puri Puch, the ex-SEBI chairperson, in some case of alleged fraud? How do you see? See, my leader Rahul Gandhi has been saying from the very beginning that she is corrupt, Madhavi Buch is corrupt, and she's doing the wrong thing. And it's come out now. He's vindicated. See, when it came to the Adani issue in the US, case against him. When it came to Madhavi Puri Buch, now the case against her, the FIR against her in Mumbai. So I can say today, with my head held up high, that my leader, Rahul Gandhi, has been vindicated. Ma'am, how do you see the situation first in Haryana, where a Congress worker was killed, now a person has been arrested? At the same time, in another BJP ruling state, Maharashtra, Union Minister's daughter has been molested. She has been, this thing has happened to her. How do you see this? See, when a Union Minister's daughter is not safe, there is complete breakdown of law and order. And what happened in Haryana to one of our Congress workers is terrible. But let's understand what is happening to women, why eve teasing and all have gone up. When the Prime Minister of the country, Mr. Narendra Modi, stands by Brij Bhushan Sharan Singh, when he's been accused of molestation by world-renowned wrestlers of ours, gold medalists, bronze medalists, he doesn't say a word. He doesn't ask him to step down. When you release Bilkis Banu's rapists, and ask them to campaign for you for the Gujarat elections, he is with them. So what is the message? संदेश क्या दे रहे हो हमारे प्रधानमंत्री कि आप रेपिस्ट हो, आप मोलेस्टेशन करो, मैं चुप होगा? वही है दे रहे हो, वो संदेश दे रहा है प्रधानमंत्री. इसी वजह से ये सब हो रहा है. मैम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि औरंगजेब ने कोशिश करी थी डिस्ट्रॉय करने की हिंदुइज्म को, वो नहीं कर पाए और अंत में औरंगजेब का ही अंत हो गया. और ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, वो हिंदुइज्म को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हिंदुइज्म कभी खत्म नहीं. See, Hinduism is part and parcel of India, and everybody has deep respect for the religion. I believe since the Bharatiya Janata Party has no other agenda, they have nothing else to talk about. They want to divert and distract of what happened in the United States. What is happening, how the stock market has crashed. There is unemployment in this country. Nothing is moving. The rupee is falling. So you have to divert and distract by bringing up these topics. My last question is to you about the new education policy. Union Minister Dharmendra Pradhan said that we are not saying that Hindi should be taught only. We are talking about the three language policy. We have not said anything regarding that only Hindi should be taught. Yeah, so I think there should be a discussion. See, now, initially it used to be a state subject, but education, I think after 1975 is in the concurrent list. So I think there should be a discussion between states and the center.
And maybe some states, since we have a federal structure, some states do not want 3 languages, some want 3 languages, some want 2. So let there be a discussion between the center and state. Let there not be a case where the center rules everything. So let there be a discussion, and that would be the way forward. मैं आखिरी सवाल हिंदी में जवाब चाहूंगा। आपने ट्वीट किया जो है रोहित शर्मा को लेके, उसको लेके जो है बहुत जो है बवाल एक तरीके से मचा हुआ है, उसको किस तरीके से? मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूं क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये बख्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। वो जब कोई अपने उनके टीम में कोई जो कैच जब पकड़ते हैं, कोई बंदा कैच पकड़ते हैं, उसको जाके हग करते हैं। वो जब आगे से लीड करते हैं, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली। और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो एक कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय, जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग? वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? आप खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, इसीलिए मैं फिटनेस के बारे में बोलती हूं। मैं फिट हूं। और अभी आजकल नरेंद्र मोदी जी भी फिट इंडिया के बारे में बोलते हो, तो फिटनेस के बारे में मैंने कहा, उसमें क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।